Welcome to the 12th video construction of villa in UAE. Today's our topic is plaster work. कि plaster work में हमने कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए प्लास्टर को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले प्लास्टर वर्क्स में क्या होते हैं, what points we will be reminded to doing the plaster work: curing, cleaning, cement rush coating, steel mesh for columns and beams joints, corner installation for doors, sand checking, need 6% crush and sand, Portland cement, pozzolana cement, making rough surface for concrete beams and columns. For conductivity, use plastic mesh. Mortar should be used in 1 hour, which we make the mortar, we can use it within 1 hour. After 1 hour it will become hard. Ratio of mortar: curing after 24 hours, and curing period is 7 to 10 days. These 11-12 points we will be just amplify in our plaster work. So the first is curing and cleaning. First we will cure our surface and clean from any dust like something. Steel mesh for columns and beam joints. हम यूज करते हैं स्टील मेश कॉलम्स और बीम्स के लिए, जो कि हमारे साथ जॉइंट ब्लॉक वर्क और कॉलम या बीम के बीच में आ जाए, तो इसमें हम एक स्टील मेश लगा देते हैं, क्योंकि बाद में क्रैक्स होने का खदशा नहीं होता है. आफ्टर द क्रैक्स removal we will install the steel mesh. So steel mesh is most important for the joint between block work and beam or column. Look at to the video. This is the joint between the column and block work. So we install with mortar the steel mesh. After that, the third point, corner installation for doors. We install corners on the edges of the block masonry for the doors or windows like that. Like you can see in the video, this is the steel corner we installing on the window. The door. For the door we installing this corners. And also you will arrange this corner by plumb bomb to straight according to the wall construction. So it's most important that you can put with the level, straight yani horizontal and vertical to the wall or block masonry. After that, rush coating, the most important thing for the installation of plaster. You can do the rush coating. Rush coating लाजमी है. रश कोटिंग क्या होता है, ये आमतौर पर जो हमारा सैंड होता है और सीमेंट का एक मिक्सचर होता है, जो कि हम पहले प्लास्टर के इंस्टॉलेशन से पहले हम एक दिन पहले रश कोटिंग करते हैं. रश कोटिंग लाजमी है, क्योंकि जो हमारा सैंड है, जो हमारा मॉर्टर है, उसमें दीवार को पकड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है. क्योंकि जब आप प्लास्टर मारते हैं तो इसका जो कोहिजन है प्लास्टर के साथ यानी ब्लॉक मेसनरी के साथ, वो बढ़ जाता है. हमारा जो प्लास्टर होता है उसमें मजबूती आ जाता है. तो रश कोटिंग लाजमी है. आपने प्लास्टर से एक इस पे रश मारना है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यूजिंग ऑफ पोज़ोलाना सीमेंट. प्लास्टर के लिए हम पोज़ोलाना सीमेंट यूज करेंगे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओपीसी भी हम यूज कर सकते हैं और पोज़ोलाना भी, लेकिन पोज़ोलाना जो है वो ज्यादा अहम है. सैंड चेकिंग एंड नीड 6% क्रश सैंड. We will check the sand for plaster that there is no have any clay inside the sand. Sand it should be grinded like not non-cohesive. So first of all we will check the sand before doing plaster. Making rough surface for concrete beams and columns. Beams और columns हमारे साथ जो होते हैं उसको हम रफली बना देना है पर प्लास्टर हथौड़े की मदद से, जो कि हमारे साथ हैमर होता है, उसमें से इसको थोड़ा मार के इसका जो सरफेस है वो रफ कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्लास्टर के लिए कोहिजन पैदा हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट, फॉर कंडक्टिविटी यूज प्लास्टिक मेश. कंडक्टिविटी जो हमारे पाइप्स होते हैं दीवारों में, या जो भी आपका इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आता है, उसको बंद करने के लिए हमको प्लास्टिक का मेश जो है वो यूज करना है. उसके बाद mortar should be used in 1 hour.
जो हमारा मसाला होता है वो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर यूज करना है. दिस इज द मोस्ट important point because this mortar will become hard and there will be have pebbles, so it will become cohesive with each other, then it will be not able to apply for the plaster. So within 1 hour we can use our mortar. Ratio for mortar: external plaster 1:3:1:6, ceiling plaster 1:2:1:3. Internal plaster we will use these ratios for the plastering of different places. After that, curing after 24 hour and curing period should be 7 to 10 days. हमने प्लास्टर जो है वो आफ्टर 24 आवर इसको ट्राई करना है, इसको क्यूरिंग कर देना है, एंड क्यूरिंग पीरियड शुड बी 7 to 10 days. हमने इसकी अच्छी तरीके से क्यूरिंग करना है. So this is the video regarding the plaster. Thank you for watching and subscribe the channel for more latest updates.